Yo guys, what's up and welcome to a new episode of Assassin's Creed Mirage। तो अभी तक तो गेम जितना पार किया है, मुझे गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो जो पिछले 3 असेसिन क्रीड के गेम्स थे ओपन वर्ल्ड, ऑल्दो मैंने वो भी एंजॉय किए, बट ये वाला प्रॉपर जो पुराना असेसिन क्रीड गेम था उसकी ज़्यादा वाइब देता है एज़ कम्पेयर टू वो 3 गेम्स जो है। एनीवेज मुझे मेनली जो इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ है एंड जो अपना स्टेल्थ एंड असैसिनेशन वाली चीज़ है, जो टूल्स वगैरह दिए ना, वो सब मुझे सही लगता है। जैसे कि इसमें से इन्होंने क्रॉसबो एंड तुम्हारा बो एंड एरो वो सब हटा दिया एंड तुम्हें कुछ दूसरे साइलेंट टूल्स दिए है, स्मोक बॉम्ब्स हो गए एंड तुम्हारे स्लीप डार्ट्स हो गए। ये सब पिछले गेम में भी थे, बट पिछले गेम में तुम्हारे बो एंड एरो वगैरह इतने पावरफुल थे, उसमें इतने खतरनाक मूव्स थे कि ये सब तुम यूज़ करते नहीं थे। एनीवेज अपना जो सेकंड मेन हिडन वन टेम्पलर वाला टारगेट है, उसका मिशन अनलॉक हो चुका है। बेसिकली उसका अपन को अभी तक आइडेंटिटी पता नहीं चली है। आई गेस वो तुम इसी मिशन में अनलॉक करोगे क्योंकि 3 क्लूज अभी तक मिसिंग है। अदर देन दैट इसमें इस बंदे को जो अपन ने असैसिनेट किया था, ये दोनों भी टेम्पलर्स के साथ थे, ऑर्डर के लोग थे, बट वो मेन हेड टेम्पलर्स नहीं थे। इस बंदे के इसमें तुम देख सकते हो क्लू मिसिंग है। मुझे लगा था अगर वो क्लू मिसिंग है तो मिशन आगे नहीं बढ़ेगा, बट अपेरेंटली जब मैंने नीचे वाला मिशन कंप्लीट किया तो ये मिशन आगे बढ़ चुका है। तो ये कुछ इफेक्ट करता है कि नहीं, वो यहाँ पे पता चलेगा क्या सीन है। उसके अलावा तुम्हें याद होगा एक दूसरा मिशन था निहाल वाला, जिसमें अपन मिस्टीरियस शार्ड इकट्ठा करके तुम्हें एक क्या बोलते हैं, एक वेपन, एक सॉर्ड हो गया, एक नाइफ हो गया एंड एक आर्मर सेट, ये 3 चीज़ें ले सकते हो। तो टोटल 10 शार्ड है वर्ल्ड में, जो तुम्हें ऑब्वियसली इधर उधर से ओपन वर्ल्ड में ट्रैवल करके या तो तुम्हें चुराना पड़ेगा या फिर असैसिनेट करके टारगेट से निकाल सकते हो। तो उसमें से जो मेरे पास 2 शार्ड ऑलरेडी थे, उससे मैंने नाइफ ले लिया था। अभी मैंने 5 शार्ड ऑल्सो इकट्ठा कर लिया वापस। तो अपन आर्मर अनलॉक करेंगे उससे एंड उसके बाद जो आखिरी 3 शार्ड है वो लेने के बाद अपन सॉर्ड अनलॉक करेंगे। तो मैं ऑलरेडी उधर आ चुका हूँ, मैं ये दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने एपिसोड यही से स्टार्ट की। इसके बाद अपन जो अपना असैसिनेशन वाला मिशन है वो स्टार्ट करेंगे। ये सॉर्ड भी अच्छा लग रहा है, बट मैं आर्मर लेना चाहता हूँ एक्चुअली अभी। क्योंकि अपन जो सॉर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, ये इतना बुरा नहीं है, इसका डैमेज भी अच्छा है एंड मैंने इसे 1 लेवल अपग्रेड कर रखा है। मिलार्ड्स आउटफिट एंड ये सीधा गोल्डन कलर का, मतलब 3rd लेवल का आर्मर है। सक्सेसफुल एयर असैसिनेशन sets off a flash of light to disorient bystanders within a 15-meter radius। ये काफ़ी ओपी एबिलिटी है, मतलब तुम अगर ऊपर से असैसिनेट कर रहे हो, उसके आसपास के लोग तो ऐसे ही स्टन हो जाएंगे। अरे यार क्या मस्त लग रहा है ये। ओह शिट, ये आर्मर सेट बहुत खतरनाक लग रहा है भाई। ये तो तुम्हें हील करता है कुछ, हर 5th हिट जो है 10% ऑफ हेल्थ हील करता है। वो कॉम्बैट के लिए मुझे गेम का थोड़ा सा एक जो वीक पॉइंट लगा वो कॉम्बैट ही लगा। स्टेल्थ काफ़ी बढ़िया किया है, कॉम्बैट में वैरायटी कम है तो काफ़ी जल्दी बोरिंग सा हो जाता है वो। ये आर्मर एक्चुअली काफ़ी डोप, काफ़ी सही दिख रहा है। इसका ये मास्क नहीं होता ना, बस ये मास्क मुझे, क्योंकि फिर अपन को बासिम का चेहरा नहीं देखेगा। मास्क छोड़ के बाकी सब एकदम सही लग रहा है, मास्क की जरूरत नहीं थी। खेलते इससे जब तक अपना जो दूसरा आर्मर था वो लेवल 2 पे ही है। अगर वो लेवल 3 पे हो गया तो वो भी गोल्डन हो जाएगा एंड वो 100% नॉइस कैंसिल करेगा तुम्हारे मूवमेंट की। यानी कि तुम अगर गार्ड के पीछे भागोगे भी ना तो भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो वो भी काफ़ी अच्छा आर्मर सेट है। रस्तम आर्मर सेट ऐसा समथिंग नाम है उसका। उसका मुझे अगला अपग्रेड वाला स्कीमेटिक मिला नहीं है। हर एक चीज़ को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें स्कीमेटिक लगता है, जो तुम्हें ऑब्वियसली इससे मिलता है, अपने क्या कहते हैं, चेस्ट वगैरह अनलॉक करने से। दिस आउटफिट कैन नॉट बी डाइड, मुझे लगा ही था उसका डाई होगा नहीं। By the Damascus gate caused by an overturned car. All travelers and merchants should be aware of significant delay. Please note that a musical competition will be held tomorrow evening. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom.
What? तुमने सुना? बैसिम की साउंड भी चेंज हो गई। उसकी साउंड ऐसे फ्यूचरिस्टिक रोबोट टाइप की आ रही है। आई थिंक ये आर्मर की वजह से। अबे Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. explore to find opportunities. Where is Arib al-Ma'muniyah, the poet? رأيت المعلم حنين اليوم؟ قسما مثل غلام صغير ومعه سلة مليئة بالمعجنات الحلوة. تبين. Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Ah, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. I need your eyes, my friend. الأشياء التي رآها حتما يقول إن الهندسة I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. These House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed Ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. करना क्या इधर exactly? It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. और कौन सा डायग्राम बचा है? इस वाले पे आ नहीं रहा कुछ। Nihal has found initial diagrams in Ahmed's workshop. Oh, yeah. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me.
You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Dirwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. I'm not sure about this armor. कटसीन का मजा खराब हो जाता है. कटसीन में भी तुम्हें इसका चेहरा नहीं दिख रहा है वैसिम का. वैसे ये प्रॉपर कटसीन तो था नहीं. अभी और कोई कटसीन आएगा तो देखते हैं. अब ये पोएट किधर है? कौन सा ईस्टर्न कोर्टयार्ड, वेस्टर्न कोर्टयार्ड कौन सा, मुझे कोई आइडिया नहीं है. The poet is resting in the eastern courtyard. इस तरफ, क्योंकि ये वेस्ट है तो There is that poet the bit loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sands. Pilot. Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. mingle with the crowd on the ground floor. The translator. What is his true name? You should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. Attention Symposium attendees. The Great Scholar's lecture will begin after a short delay. Meanwhile, enjoy our bounteous snacks and the sparkling wit of your fellow guests. Pardon me. The lecture will begin soon. Please, amuse yourself with the other guests until the gong summons you. لكن مع وجود بضائع فاخرة وزبائن دنيئين متذمرا لكنني لا أحب مشاهدة العمال वो कौन सा मिशन दिखा रहा है? क्लोज. अच्छा ये वाला टेप. Pardon me. The lecture will begin soon. Please, amuse yourself with the other guests until the gong summons you. شخص ذكي جدا لكن المسألة تكمن في يعيدون بناء الاستقرار وأمر الخليفة بارك الله فيه وأطال عمره ولا نأخذ. That astronomer might be one of them. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance.
Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. वही ऑर्डर का मेंबर. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Look to intel to cover Al-Rabisu's location. उसका लोकेशन अपन को पता नहीं है. Okay. It is. This seems little bit different as compared to the जो पहला टारगेट अपन ने मारा था. मैं वापस ये पहन रहा हूँ कि कट सीन में अपन को बासिम का चेहरा नहीं दिख रहा है. काइंड ऑफ फिर कट सीन्स थोड़े से अजीब लग रहे हैं क्योंकि अपन को फिर बासिम के इमोशन समझ में नहीं आ रहे कि वो उस टाइम पे करना क्या चाहता है, मतलब दिखाना क्या चाहता है. I need to hunt him down. मे बी एक आधे कोई एपिसोड में जिसमें अपन ऊपर से असैसिनेशन कर रहे होंगे तब अपन वो वाला आर्मर पहन लेंगे. उसकी एबिलिटी तभी ट्रिगर होती है जब तुम एयर असैसिनेशन करते हो. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to... Oh, password. Password है. Looks clear. I can use my weapons again if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet! We better find Fazil's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase.
That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. Don't worry. We won't let our guard down. Show yourself. I know yourself. Too obvious? Hold on. Dead. Huh? No. Come Trouble comes our way. Let's bathe in blood. What the? Hey! Trouble about. Feel it. Right. And back we go. Who? अरे आ ही रहे ये लोग दे कोई नहीं Looks like somebody left a book in the stairwell. Hold on! ये किधर से आ गया भाई A book on the astronomy contains the passphrase to the guarded room. A book on astronomy contains a passphrase to the okay. Better not use my weapons here. The Folly of Poetry by Fazil Fahim. Does not sound too romantic, to be honest. करना क्या है मुझे जो बुक्स मिले उसमें से एक आधा पास फेस बोलना है क्या Better not use my weapons here. Gatekeeper! Those who came... I will वो ऊपर ही कुछ है उधर अपन को पास फ्रेज ऊपर से ही मिलेगा ये देख लेते क्या है पहले Fraud Fazel went into hiding. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. The gardener on the roof might have the basement key. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking.
No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samarra. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars? Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. Northwest courtyard. So I guess अपन की लेके नॉर्थवेस्ट कोर्टयार्ड से निकल सकते, तो फिर ये पास तो शायद ये पास फेस की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। अब सबसे पहले की लेना थोड़ा देखना पड़ेगा ऊपर कहाँ से चढ़े। आई डोंट थिंक अपन अंदर से चढ़ सकते, बाहर से चढ़ना पड़ेगा। Where is the Kahraman? I wish to complain about the shortness of the lecture. I remain profoundly unedified. Did you see the powerful terror on the आई गेस अपन अंदर से भी जा सकते होंगे, बट फिर वो एग्जैक्ट डोर वगैरह ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से कहीं से अगर चढ़ पाए तो हाँ, यहाँ से चढ़ सकते हैं। Looks clear. I can use my weapons again if needed. अबे की किधर है भाई? I need your help, my friend. वो रहा। ओ भाई बाकी दोनों क्यों नहीं सोए? एक सेकेंड, एयर असैसिनेशन वाला था ना, इसी में ट्राई कर लेते हैं। यस वो एक्चुअली मैंने अपनी एबिलिटी यूज कर दी, बट बिना एबिलिटी के भी हो जाता।
Attack the alien! Can't hit me! That hurt! Focus, Basim. Yeah! Like your fault! ये लोग अंदर खड़े हैं. Keep to the roof, I say. Plenty of work to do up here. Safer too. Avoid the calls, especially after the murder in the library. What's this place coming to? And those screams from the basement. Makes my stomach crawl to hear such pain. Remember you slowly. You met your end. Wait just a... जा ना चेक कर. Coward! Not done with you! Not great. Keep to the roof, I say. Plenty of work to do up here. This seems to be you. Avoid dark hallways, especially after the murder in the library. ओके बेसमेंट के एक्सेस इसने बोला था नॉर्थ वेस्ट ना, तो ये वेस्ट है ये नॉर्थ है, यानी कि इस तरफ कहीं भी होना चाहिए. देखते हैं. Western outer courtyard. अपन वेस्टर्न साइड में ही है ना, है तो वेस्टर्न साइड में ही. फर्स्ट वाला जो असैसिनेशन मिशन था ना, उसमें अपन उस टारगेट को बाहर लेके आना था. इसमें अपन उसके हाइडआउट को ही ढूंढ रहे हैं. किधर है भाई? This looks like a hidden entrance. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Don't worry. Hey! It was your time.
ये रास्ता किधर जाता है? I better not use my weapons here. मुझे लग रहा है ये वो हिडन डोर के अंदर है अपन, जहाँ पे वो बंदा पासवर्ड पूछता रहता है ना। हाँ हाँ, ये वही है। Ravi, so you consider yourself the great scholar, do you not? And as you will tell anything with years, Alru is your great work. Then, why then, with such abundance of greatness, is there such a lack of progress? You give assurance. I expect you to honor them. Almardikhwar, Almardik, क्या पता कौन है? Seems like order का कोई upper member है जो इसको threaten कर रहा था। मे बी हो सकता है कि जो मेन ऑर्डर का फाइनल टेम्पलर हो, फाइनल बॉस जो मिडल पे जिसका सिंबल बना हुआ है, उसका लेटर था शायद। नॉट श्योर, बट मैं जैसे ही अज्यूम कर रहा हूँ। वो भी मर गया लॉल। अच्छा, वो आग फैलने से ही मर गया। There is a deep wrongness here. A reek of rot and iron. Those robes might help me get closer to Fazil. Robbing is mandatory. No subject shall enter if they are not wearing their robes. You may find the appropriate grab in the room adjoining to the recuperation cell. Okay. What have they done to these people? Poor guy will not need this anymore. ये experiment कर रहे हैं लोगों पे। This should help me blend in. ये खुद पे experiment कराने वाला है लग रहा है। Not a good idea, I would say. Let's see. Wearing a patient robe might get you closer to Fazil. Using disguise. A disguise can help you avoid detection to a certain location as long as you keep a low profile. If you are detected, पढ़ा नहीं मैं क्या बोला, आगे रेडी नहीं किया। मिशन फेल होगा कि अपने को अटैक करेंगे जो भी। I don't think अपने पास weapons है, अपने बस hidden blade है शायद। I don't belong here. Next subject! In here, now! There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my lecture? It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the round city, or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud.
In here, Lackwit. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? ये मारने वाला है उसे. Yes. Justice. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. वो जिन दिखेगा इसे वापस. I need to get out of here. Get back to the mill. ओके ये वाला असैसिनेशन फर्स्ट वाले से काफ़ी डिफरेंट था. ऑलरेडी 2 असैसिनेशन ही किए ये गेम में, मेजर असैसिनेशन. एंड तुम्हें याद होगा तो वालहल्ला में बहुत बड़ी सी ट्री थी जिसमें अपन छोटे छोटे टेम्पलर्स को मारते थे, उनके बॉडीगार्ड्स को मारते थे, फिर जाके मेजर असैसिनेशन होते थे. उसमें भी मेजर असैसिनेशन में कुछ इतना ज़्यादा क्या कहते हैं वैरायटी नहीं थी. बट इसमें मैंने 2 किए हैं, दोनों ही मुझे इतने डिफरेंट लगे कि मैंने एंजॉय किए. उसमें पहला वाला लगता है, ये वाला लगता है. होप जो बचे हुए थी ना वो भी थोड़े बहुत ऐसे ही डिफरेंट रहे. स्लो डाउन द टाइम व्हाइल एमिंग, थ्रोइंग नाइफ, एक्स्ट्रा टूल कैपेसिटी. फिलहाल मुझे ये 3 टूल सीखना है. वो प्रॉक्सिमिटी मुझे पता नहीं चाहिए कि नहीं. Basim skill as pickpocket increase, helping you to retrieve his targets valuable more efficiently. I think वो ही अच्छा है. ये चीज़ें उठाने में मदद आती है. अभी मुझे 3 शार्ड्स चुराने हैं एंड डेरविस का जो मिशन है जिससे उसे जो आर्टिफैक्ट चाहिए वो सब निकालने में मदद होती है. थोड़ा और ईजी रहा था तो मैंने वो ये उठा लिया. To taste the infinite ultra abyss. So I hope your progress this month. ये किसने लिखा है? Algu.
उसको तो अपन ऑलरेडी मार चुके हैं। इन सब का नाम अल से है शायद, जो भी ऑर्डर के मेंबर्स है ना। अल बहामुत, with the caliph's death we have been deprived of valuable pawn. Rest easy, the board is reset. The board is reset, but new pieces are in play. From the ashes of all that we have built shall new fires be kindled, fan the flames of dissent, spawn suspicion and reap reward. Okay, so suspicion and reap reward. Anarchy is our ally. Order shall rise from chaos. The snare has been laid. Al Bahamut किसी एक का code name है. No question about it. Fazil was neck deep in the order. Okay. The scholar's notes. He believes in these ancient beings, the masters of memory. वो वेपन आ गया अपने पास। अच्छा, अपन ये वाला कॉस्ट्यूम भी आई थिंक ये आर्मर ही मिल गया तुम्हें। मिला है क्या? अच्छा ये कॉस्ट्यूम है, ठीक है। तुमने आर्मर के ऊपर पहना हुआ हो बेसिकली। ये कॉस्ट्यूम को हटाओगे इससे। हाँ ठीक है, ओके। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अगर वो पहन के घूमना है तो तुम वो पहन के भी खेल सकते हो। इससे मिल लेते हैं, एंडी एपिसोड रैप अप करते हैं। अगले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ जो मिस्टीरियस लेटर वाला साइड मिशन बोलना ठीक नहीं रहेगा, वो तो मिशन उठाने के बाद ही पता चलेगा साइड मिशन है मेन मिशन है क्या है। वो वाला करते हैं, एंड वो मिशन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर अपन अगले टारगेट पे चलेंगे। Basim Ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, we cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No, it is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well.
One last thing. Arib, was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. अरे वो पोएट जिससे अपन ने बात की थी, लगा तो नहीं कि वो इन्वॉल्व है। अब देखते हैं आगे कुछ। नोविस, ओके। ना रैंक एक एक करके बढ़ रहा है। वापस कुछ मिला क्या? टैलिस्मैन? यस, वो ब्रॉन्ज था, ये सिल्वर था। सो यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया है। तो देखो अभी अपने पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। Nihal and I share a bond like no other. Reveal the chamber's secret. ये 3 क्लू नोट। निहाल has been obsessed with ancient writings. मुझे लग रहा है ये अपने आप कोई ना कोई मिशन में, निहाल के मिशन में ही आगे आएगा। ये जो 3 क्लूज है ये कुछ अब उनको बता नहीं रहे। व्यू डिटेल्स, हो सकता है वो जो सॉर्ड है वो भी निकालने के बाद कुछ पता चले। Nihal's note mentions an oasis. The ancient place seems to be filled with some kind of energy. I have never seen anything like this place. It feels unreal, as if coming straight from a dream. दो ही चीज पता चली उधर। ये तो चीजें चुराने वाली है, लोगों के बस जाके तुम्हें चीजें उन स्टील करना है एंड वो लाके इसको देना। इसीलिए मैंने वो स्टील वाला स्किल जो अनलॉक किया। ये वाला अपन अगले एपिसोड में करेंगे। जो मिस्टीरियस लेटर है ना, मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है ये स्टैंड अलोन है, ये कहीं से कनेक्ट होगा क्या पता नहीं, मुझे स्टैंड अलोन लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद अपन ये वाले पे चलेंगे क्योंकि काराक में रोशन ने बोला था वो काराक जा रही है एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन है। तो हो सकता है ये वाला बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, इसलिए पहले ये करेंगे, आखिर में ये करेंगे, फिर फाइनल बॉस तो है ही। एनीवेज, आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।